Welcome to Spear Scoop. Myself Aryan Mishra, and today I'm gonna talk about China's unusual food consumption. People usually say that Chinese eat everything with four legs except tables and chairs, everything that flies except helicopters or planes, and everything that swims except submarines. However, Chinese people eat everything due to the large population adapted to famines and believes in the medical benefits of eating various meats. They rely on agrarian resources and rely on living creatures for sustenance. Chinese people ate everything due to their large poverty and dependence on agriculture. Rice cultivation and the late industrial revolution led to a belief in eat what you get and avoiding extravagant consumption. Talking about the idea of bat soup and why it seems Chinese people eat strange foods including dog. Is bat soup the cause? No, there is no such thing as a bat soup. At least in China, it's not a dish that exists in Chinese cuisine. As catchy as the name may be, even I thought it was funny at one point. China's people rarely eat bats, though some southern Chinese in rural areas are known to eat some bat's meat and entrails for medicinal purposes. Now speaking about China's perspective then, Chinese meat consumption has shifted due to changing cultural habits with beef, pork, chicken, duck and seafood being the most popular. China has implemented food safety measures in 2021 to address food waste, but people still adjust to these regulations. Restaurants can fine customers for excessive food ordering and businesses can collect waste disposal fees. Additionally, China banned live streaming of binge eating and competitive eating, shutting down online accounts featuring such eaters. As the COVID-19 outbreak draws sharp attention from the West, a voice appears on the horizon. The Chinese eating bats caused the COVID-19 outbreak. Start here, Dana, and I'll tell you why it started in China. Okay. Because they have these markets where they're eating raw bats and snakes. Oh, Jesse. They are a very hungry people. Well, I think China is to blame because the culture where people eat bats. It's not racist to point out that eating bats is batshit crazy. This groundless accusation is not only voiced by Western politicians and media, but also circulated among Western netizens, which engendered the spread of countless racist memes. So here comes the big question. Do Chinese people eat bats? As the only mammal that is capable of sustained flight, bats have developed the most unique and robust immune system, which makes them immune to the virus that is fatal to others. Therefore, bats are also dubbed the natural reservoir of viruses. Ebola, rabies, and the raging COVID-19. Almost every lethal disease can be traced to bats. Close contact with bats poses a threat to human health. Even so, the phenomenon of consuming bats is not uncommon. According to an article published by the journal Springer, bats are consumed as food in African, Asian, European, and Pacific countries. The 1999 edition of Oxford Companion to Food compared the taste of bat meat to that of chicken. In Palau, fruit bat soup is a popular delicacy. In Indonesia's Manado, bats are prepared with green chili pepper and made into paniki. So, if we talk in global perspective, then the growing demand for fuels and chemicals is fueled by factors like overpopulation, global warming, and fossil resource scarcity. This demands sustainable and innovative strategies for the chemical industry. Food supply chain waste has potential as a raw material for fuels and chemical production
due to its diverse components and higher value applications. Now let's see what people wants to say on this topic. Good morning from Spearscope. I'm Draksha reporting live from Bhavan's College. Today we are here to gain perspective of people about China's unusual weird food consumption. Here we have two people with us. Let's ask them some questions. तो जैसा कि ऐसे माना जाता है चाइना में लोग डॉग मीट खाते हैं, बैट खाते हैं, लिजर्ड्स खाते हैं. क्या आपको लगता है वो सही में ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं? सही में वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं क्योंकि चाइना में काफ़ी सारे मार्केट्स हैं जहाँ पे ओपनली डॉग मीट सेल होता है. डॉग कौन खाता है? डॉग हम लोग पालते हैं. डॉग खाते हैं वो लोग, स्कॉर्पियोज भी खाते हैं, स्नेक्स भी खाते हैं. मतलब हर वो ऐसी चीज़ जो इंडिया में तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता वो सब वो खा रहे हैं और वो जिंदा भी है. क्या आप इस वाक़ये से सहमत हैं? जी सही में हम लोग बहुत मीट खाते हैं एंड काफ़ी स्कॉर्पियोज, फिर कॉकरोचेस एंड मतलब A to Z जितने भी एनिमल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पालते हैं जैसे बिल्ली भी है बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो जैसा कि आप सहमत है कि वो ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं, आपको क्या लगता है वो क्या रीज़न होगा जो जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें खाना स्टार्ट किया है और वो अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि उधर एग्रीकल्चर नहीं है और पॉपुलेशन भी इतना है, लोगों उधर इतने लोग हैं कि उनके पास जो प्रॉपर फूड रहता है वो तो वो खा ही नहीं सकते. इतने लोगों में पॉसिबल नहीं है तो वो कोई भी ऊट पटाट हर चीज़ खा लेते हैं. आपका क्या कहना है इस पर? उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जिससे उन्होंने ये सारी चीज़ें खाना स्टार्ट किया और वो अभी तक ये कंटिन्यू कर रहे हैं? सही में उनके पास एग्रीकल्चर नहीं है और उनका जो टेस्ट है वो मीन्स काफ़ी ओवर हो चुका है वो चीज़ से, तो इसलिए उनकी वो आदत छूटी नहीं है और नहीं छूटी तो इसलिए वो लोग वो कंटिन्यू करेंगे. तो जैसा कि ऐसे माना जाता है कि चाइना में लोग बैट खाते हैं, डॉग मीट खाते हैं, तो क्या आपको लगता है वो सही में ऐसी चीज़ें खाते हैं? खाते ही होंगे, मेरे को तो लगता है ज़रूर खाते होगा. जो चीज़ें मतलब वो सिर्फ इंसान नहीं खा रहे ये बड़ी बात है. नहीं तो वो ऐसे लोग हैं कि वो इंसान भी मार के खाने लग जाएंगे क्योंकि बड़े अनहाइजीनिक लोग हैं. हम देखते हैं मतलब नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे वो लोग खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, उनको मज़े आ रहे खाने में, तो ये कुछ भी खाते हैं. कॉकरोच हो गया, फिर रेप्टाइल्स हो गए, कुछ छोड़ा ही नहीं होंगे. बहुत बुरी चीज़ है. तो जैसा कि आपने कहा आप मानते हैं कि वो ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न हो सकता है उनके ये स्टार्ट करने का, ये सारी चीज़ें खाने का और वो अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं? जैसा कि हमारे कल्चर में इंडिया में हमको सिखाया गया कि वेजिटेशन से कैसे खाना बनाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं गई. ठीक है, तो मेरे हिसाब से उनको बस जो दिखता है बस वो खाते हैं इंजॉयमेंट के लिए. जैसे हमारे इधर भी नॉनवेज खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, लेकिन वो इतनी वियर्ड चीज़ें खाते हैं तो बस वो मज़े के लिए खा रहे हैं. मेरे को तो वही लगता है बहुत अनहाइजीनिक है. तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है जो उन्होंने ये स्टार्ट किया बैट और ये सब खाना? क्योंकि इन डिटेल तो मुझे ये पता नहीं, लेकिन शायद बहुत पुराने कल्चर से उनका ये चलते आ रहा होगा. उनके पूर्वज भी यही खाते होंगे तो उस हिसाब से है. लेकिन आगे आउटडेटेड होते जानी चाहिए, चीज़ें बंद करनी चाहिए. क्या कह सकते हैं. धन्यवाद. तो जैसा कि आपने देखा ये ऐसा मानते हैं कि चाइना में लोग अनयूजुअल वियर्ड फूड खाते हैं और ऐसे स्पेसिफिक कोई उनके पास रीज़न नहीं है बट ये लोग अभी भी वो खाते हैं.